More proof of cover-up in Kolkata. जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। Parents allege hurried cremation. Family cries big betrayal by Mamata government. Hair-raising details in Abhya's autopsy. 14 injuries on Abhya's body. Injuries in vagina, on lips and knee. Tainted ex-principal in the dog. Supreme Court takes cognizance. Outrage on the streets by India's doctors. Justice for Abhya. Today is day 10 since that horrifying crime in Kolkata. But it's actually gotten worse today, and I'll tell you why on the show. Thanks as always for being with 5 Live. I'm Shiv. Newsbreak coming in. It's a new twist to the investigation being carried out by the CBI 10 days after the horrific crime in Kolkata that has captured the horror of an entire nation. CBI sources tell India Today that the Central Bureau of Investigation, now the lead agency investigating the case, may conduct a polygraph or lie detector test of Dr. Sandeep Ghosh, the controversial former principal of the RG Kaur Hospital. According to the CBI, multiple inconsistencies have been found in Dr. Sandeep Ghosh's statement. I want to bring in India Today's Anupam Mishra for more on this. Anupam, the spotlight now shifts to the principal, his own past. The CBI is now likely to hold a lie detector test of Dr. Sandeep Ghosh. Well, Shiv, let me tell you, according to CBI sources, they are considering this polygraph test of Dr. Sandeep Ghosh, but it totally depends upon the voluntary consent of Dr. Sandeep Ghosh. Because according to CBI sources, the statement they are recording from Sandeep Ghosh is they are getting a lot of discrepancies, because when they are trying to match it with the victim's parents, they are not matching, and that is why they are thinking about it. But before that, they will hold a meeting and discuss the issue with them. They will then go to Dr. Ghosh and they will ask for voluntary agreement. If he agrees, then they will go further. They will take further steps on this regard. But right now, what we are getting from CBI sources is that a lot of discrepancies have been found from the statement which have been recorded for the past 4 days by CBI, and they have done marathon interrogation from Dr. Sandeep Ghosh, and the discrepancies is basically regarded the night of the crime, that is on 9th of August from early morning, and the statement which they have recorded from the victim's parents, they are not matching. All right, so lie detector test is possible. We'll keep a track of that. Newsbreak. Thanks, Anupam, for bringing that to us. In October 2020, after the shameful, forced and hurried cremation by night of a Dalit girl in Hathras in Uttar Pradesh, and you remember that, following her gang rape and murder, Trinamool Congress netas had dashed to Hathras in UP to protest against the clear attempt to suppress the fallout of that terrible crime. They had every right to be there, these Trinamool MPs, to show solidarity with the grieving family, to amplify the call for justice, and to pressure the Yogi Adityanath government and UP police that had clearly been caught trying to stop the story from ballooning more than it already had. There was a real cover-up underway in Uttar Pradesh at that time. But 4 years later, the party to which these brave MPs belong has been accused of indulging in the exact same thing in the state where that party is in power. The Trinamool Congress, which should be complimented, frankly, for piling the pressure 4 years ago against Yogi Adityanath's government in UP for its attempts to cover up the Hathras crime, has now been accused by no less than the Kolkata rape and murder victim's father of precisely the same thing. Despite strong denials from the Kolkata police and the government,
the victim's father has said, and I quote, "There were 3 bodies awaiting final rites at the crematorium, but our daughter was cremated ahead of them. We were so upset and in a state of shock after losing our only child that we couldn't think or act at the time." Our reporters even visited the crematorium, where the workers there say that the Kolkata police had pressured them to hurry up. Now, while the Mamata government accuses the BJP and left of manipulating the case, I am wondering if the father of the victim can be ignored on this searing point of the cremation of his own daughter. I'm honestly wondering what the family could possibly gain by suggesting that their daughter was hurriedly cremated. Should we sit here and dismiss what a grieving father is saying, telling ourselves that these are just the pained words of a grieving family? Would he lie about the funeral of his own child is something to ask ourselves. Or are we left with the sick reality of the selective application of political outrage when it comes to rape in this country? The Trinamool Congress under Mamata Banerjee, which I believe deserved applause for lending its political capital to the public rage against Yogi Adityanath's government 4 years ago over that suspiciously hurried cremation of the gang rape victim in Hathras. Today it is shuffling its feet, spewing platitudes and inanities and hyperbole over hanging the accused when it stands charged with rushing the cremation of the lady doctor at the center of this simmering national flashpoint. There has undoubtedly been a torrent of misinformation and some incorrect facts that have crept into both formal and informal reporting of this story. But are there 2 ways to look at this tale of 2 cremations? Can there be a more scathing example of what I call my rape versus your rape than a party like the Trinamool rushing across state lines 4 years ago to rightly shake its fist at a rival government for overseeing the hurried cremation of a gang rape victim in Hathras, and now staying totally silent as it is accused of exactly the same thing? Think about that. This is a story of 2 cremations, but there's outrage on only one. Over 14 injury marks on her body. Injuries on her vagina, head, neck and lips. Forceful insertion in the vagina. White, thick, viscous liquid inside vagina. And hemorrhage in the lungs. Parents allege Abhaya's body was cremated in a hurry to destroy evidence. क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। The doctor who was raped and murdered at Kolkata's RG Kaur Hospital sustained extensive injuries before her death. These are the gut-wrenching revelations in the post-mortem report accessed by India Today. The cause of death has been determined to be manual strangulation associated with smothering. The lawyer representing the victim's family has claimed that she might have been murdered elsewhere and not at the hospital. सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। The lawyer claims more people may be involved in the rape. डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए, तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। The parents of the victim are alleging a wider conspiracy behind her murder. They claim that the body of their daughter was cremated in haste, contradicting statements given by the Kolkata police and government. দুটো ঘটনা যদি কখনো ঘটে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আমরা চাই এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য ফাঁসির দাবি করছি, যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে আগামী দিন কেউ এই কাজ করতে সাহস না পায়। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का
बॉडी जला दिया गया। टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। The victim's family also questioned why the suicide theory was floated at first. আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। Why this impression is being created that UD case necessarily means it is a case of suicide? It is not true. Please, the entire population is being made to understand that UD case means suicide. We wanted to make it a case of suicide. It is not true. The CBI, which has taken over the probe, is ascertaining if there is a bigger conspiracy behind the rape and murder. So far, only one suspect, Sandeep Roy, a civic volunteer hired by the Kolkata police, has been arrested. With Indrajit Kundu and Anupam Mishra in Kolkata, Bureau Report, India Today. The cremation allegation by the parents of the victim in Kolkata is a story that has now escalated after the parents have on record alleged that they were hurried into that cremation of their daughter, the victim at the center of this entire story. India Today has tracked down the crematorium staff, the people who actually conducted the crematorium, and they've told India Today that it is true they were asked to hurry up with the last rites of the victim, which raises the big question, why were they asked to hurry up? What was the big hurry? The crematorium staff, as you will hear them say, that the crematorium was crowded with police, the area's MLA and councillors were also there, and despite 2 bodies waiting cremation in line, the victim's body, as the father also confirms, was actually cremated first. What was the tearing hurry? This is suspicious, isn't it, viewer? There's no politics in this. Listen into what the crematorium staff told India Today's report. 2 बॉडी के पहले पुलिस भी था, इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया था, पुलिस आदमी से ज़्यादा पुलिस था, एमएलए भी था, काउंसलर भी था। जब हम रजिस्ट्री किया तो उसका मम्मी भी नहीं था उधर। मम्मी भी अगर बोलते जे हम लोग को लाइन में करो तो हम लोग लाइन में करते, लाइन में कुछ नहीं बोला था। और बॉडी पोस्टमार्टम हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो जाए। अच्छा, तो मतलब पुलिस ने कहा कि बॉडी को जल्दी जलाना है? नहीं, बोला था जो बॉडी आएगा, जो बॉडी आया था ये बहुत आदमी आएगा, यहाँ कंजेस्टेड गाड़ी भी बहुत था। मान लीजिए 100 पुलिस के लिए तो 110 गाड़ी तो होगा ही, गाड़ी भी इधर कंजेस्टेड एरिया हो गया था, आदमी को आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा था, इसीलिए पुलिस बोला है जो थोड़ा जल्दी करने के लिए। पुलिस पहले ही से हमको बोल के रखे थे जो हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग देखा तो मालूम है, तो लोकली बॉडी हम लोग को तो मालूम है, अंबिकापुर है तो हम लोग को नज़दीक ही है, हमको तो मालूम ही है जो ये लड़की आएगा, तो ठीक है आएगा। तो हम बोला तो हाँ हमको तो मालूम ही है तो आएगा, बोला ठीक है। तो पुलिस ने आपको पहले क्यों बताया? क्या हर बॉडी जो आती है उसमें पुलिस आपको जानकारी देती है, हर घटना में देती है? नहीं, कोई VIP होगा तो तब बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी को लिए पुलिस नहीं बोलते। And here's the initial allegation from the father of the young lady doctor who was raped and murdered 10 days ago today. Here's what the father said about the hurried cremation of his daughter. This is what he's alleging. And remember, this is in response to total denials by the Kolkata police, who have come out to say there was absolutely no forced cremation and that everything was done by the family. You've now heard the cremation staff. Here's the father. अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम इसलिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। Our Crime Bureau Chief Arvind Ojha is on the ground in Kolkata, bringing us many different layers of this story that have so far been unreported. Arvind, जो victim है, उनके पिता
जो क्रेमेटोरियम में है, जो शमशान गृह में जो काम करने वाले हैं, वो भी कंफर्म कर रहे हैं अरविंद कि जो क्रेमेशन था वो एक सस्पिशियसली वो बहुत जल्दबाजी से कर लिया गया था। कुछ लोग पहले थे लाइन में, लेकिन इस जो विक्टिम है उनका क्रेमेशन पहले किया गया था। क्या ये एंगल भी इन्वेस्टिगेट होगा अरविंद? देखिए शिव, जिस तरह से फैमिली ने एलिगेशन लगाया और फैमिली के जो लॉयर हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया, हमने उसका रियलिटी चेक करने की कोशिश की और हम उस शमशान घाट पर गए जहां पर जो विक्टिम है उसका अंतिम संस्कार हुआ था और हमने वहां पर भोलानाथ पात्रा जो मैनेजर है उससे बातचीत की। उसका कहना था कि पुलिस ने पहले बता दिया था, पहले इंटीमेट कर दिया था कि जो बॉडी है वो लड़की की आने वाली है। 2 बॉडी पहले से पड़ी हुई थी। पुलिस ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार जल्दी करना है, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि फैमिली की तरफ से भी कोई अपोज नहीं किया किसी ने कि हमें लाइन में लगना है। और साथ ही साथ जो मैनेजर है उसने ये कहा कि बहुत ज्यादा पुलिस थी यहाँ पर, बहुत वीवीआईपी थे। रात 12 बजे के बाद जो डेड बॉडी है वो वहां पर पहुंची थी। हमने उनसे सवाल किया कि क्या नॉर्मल डेज में या जो नॉर्मल होता है केस, उसमें क्या पुलिस आपको पहले से इंटीमेट करती है कि हम कोई बॉडी लेकर आते हैं, जिसके जवाब में उसने मना किया कि इस तरह की कोई इंटीमेशन पुलिस पहले से नहीं देती है। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ, इस वजह से फैमिली एलिगेशन लगा रही है और जो लॉयर है उनके लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कंफर्म भी कर रहा है। हालांकि जो मैनेजर है वो ये भी कह रहा है कि यहाँ काफी भीड़ थी, पुलिस की 10 से ज्यादा गाड़ियां थी, वीवीआईपी लोग थे, इलाका कंजेस्टेड हो जाता, इस वजह से पुलिस ने जल्दी करने को कहा। अब एक्चुअल जो हकीकत है वो क्या है, ये अब सीबीआई जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, हर व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। अभी कुछ देर पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट का परमिशन भी पुलिस को सीबीआई को मिल चुका है जो अक्यूज्ड है संजय रॉय का, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि या तो ये कुछ छुपा रहा है या उसके बयानों में काफी कंट्राडिक्शन है, तो उस वजह से उसका पॉलीग्राफी टेस्ट का परमिशन भी सीबीआई को मिला है। लेकिन साथ ही साथ फैमिली ने जो एलिगेशन लगाया था, कहीं ना कहीं जो मैनेजर है उसको वो कंफर्म करता हुआ इंडिया टुडे के इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है। अरविंद, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक दिस पर्टिकुलर एंगल एंड द सेवरल अदर एंगल्स इमर्जिंग only from India Today's ground reportage taking this story forward. Nobody reporting it like we are. The other big glaring example, an angle emerging from the story is not the accused. The accused is being investigated, but Dr. Sandeep Ghosh, the former principal of RG Kar Hospital in Kolkata. He was the principal when the crime took place. He's under intense scrutiny by the CBI, who, as we told you at the beginning of this show, might be subjected to a lie detector test. Ghosh has been questioned for over 40 hours across 4 days. In the past, he's been accused of serious misconduct, including financial corruption, misuse of corpses, and running bribery rackets inside the hospital. Take a look at what we know and what is being alleged against him. The doctor who was at the helm of affairs at RG Kar Hospital in Kolkata, where Abhaya was raped and murdered, is now under the scanner. The ex-principal, Dr. Sandeep Ghosh, is facing multiple marathon grilling sessions by the CBI. The former principal has so far been grilled for over 40 hours over 4 days. Dr. Ghosh faces damning charges from an ex-colleague at a Murshidabad hospital. Ghosh has been accused of engaging in corrupt practices, including allegations of financial misconduct. He was also accused of redirecting corpses meant for post-mortem to unauthorized users, a violation that strikes at the core of medical ethics. He's also accused of running an illegal drug recycling racket and failing students for bribes. वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। The ex-principal has a legacy of dubiously docking multiple transfer orders. Ghosh was transferred out of RG Kar twice in the past,
But each time he managed to overturn the transfer order and stay put at the controversial hospital. He was shunted out a third time after Abhaya's rape horror, but was reinstated and given a fresh posting in just 4 hours by the Mamata Banerjee government. The Kolkata High Court, however, asked him to go on forced leave pending this investigation. The parents of the victim doctor had accused him of floating a suicide theory, a charge the CBI is also probing. कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इनवॉल्व है इसमें। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে। Meanwhile, the BJP is alleging an organ trade scam in the hospital. बहुत सारा मामला आरजीकर में हुआ था, किसी का सुसाइड हुआ था, किसी ने ऊपर से कूद गया था, बहुत सारा कुछ हुआ था इसमें। और इसमें संदीप घोष जो है वो भी इसमें नाम इसमें जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पूरा के पूरा विचार होना चाहिए। आरजीकर में बहुत सारा कुछ रैकेट चलता है, ऑर्गन्स का भी रैकेट चलता है, लड़की लोग बेटी लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। Does the disgraced former principal hold the key to the rot afflicting this Kolkata hospital? Bureau Report, India Today. I want to go back to India Today's Anupam on the ground. Anupam, Dr. Sandeep Ghosh, has been grilled, interrogated for over 40 hours across 4 days. His, very questionable past, those facts, those allegations are all coming out right now. But I think one of the most suspicious actions that took place and why everyone has started suspecting this man is also because of the swiftness with which he was reinstated in another organization immediately after his suspension. And therefore, this angle becomes very important now about why he is so well connected and who is protecting him. Well, Shiv, a lot of allegations are coming up against Dr. Sandeep Ghosh, the former principal of RGKar Hospital, and the way he was reinstated in another medical college just ahead of his... in the morning he quits and in the evening he was reinstated in another hospital. So that also raised few questions, and a lot of political parties also raising a lot of questions. But let me tell you that a lot of rumors and murmurs are also floating in social media. But CBI has to filter these allegations. A lot of things are happening here, and they will have to verify the allegations which are directly connected to this heinous murder of this doctor of RGKar Hospital. So it depends upon CBI which allegations they want to pick and which allegations they want to probe, and which allegation is directly related to this heinous crime. This is the first priority of the CBI, and that is what CBI is doing at present. All right, thanks Anupam. We'll leave it there for the moment. The chorus for justice for Abhaya is growing with each passing day. It's getting louder. The organic nature of the protests means this cannot simply be dismissed as political rallies or political crowds being brought in. Doctors are still on the rampage in different parts of Kolkata and across the country. Well, the latest, of course, is that the Supreme Court has taken suo motu cognizance, that is unilateral cognizance of the Kolkata rape case, the rape and murder case. A 3-judge bench headed by Justice D.Y. Chandrachud will hear the matter tomorrow. That is Tuesday. This decision was taken yesterday. This comes as thousands of doctors, lakhs in fact, are still on the streets demanding justice for the 31-year-old trainee doctor who was raped and brutally murdered at the RGKar Hospital 10 days ago. Over 70 Padma awardee doctors have also written to the Prime Minister demanding action against the heinous rape and for protection of doctors. The Padma awardee doctors also demanded a separate law to deal with violence against health workers.
Well, the Bengali film industry is also out on the streets of Kolkata more than a week after the crime took place. It clearly could not sustain its silence. It's on the streets of Kolkata seeking justice for the rape and murder victim. আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল, আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় কাম্য। না, তার কারণ হচ্ছে কিছু লোক সবসময় থাকেন ঝামেলা পাকানোর জন্য, ওটা না করলে সাধারণ মানুষের জন্য আনসেফ হয়। আমি এখনো জানি না ওখান থেকে কোনো একটা ঢিল এসে পড়বে কিনা। পুলিশ প্রশাসন যা করছে ঠিক করছে। এখন আলাদা করে আমার আর কিছু বলার নেই, সারা পৃথিবী বলছে এর বিচার চাই, এর স্বচ্ছ তদন্ত চাই, এর সম্পর্কে যাবতীয় যা যা সন্দেহ আমাদের মনে আসছে তার প্রকৃত নিরসন চাই। এছাড়া আর কিছু নয়, মানুষের সুরক্ষা, মেয়েদের কাজের জায়গায় সুরক্ষা, যত জায়গায় দাবি আছে তার অধিকাংশই সঙ্গত, অতিসঙ্গত, তার সঙ্গে থাকতে চাই। না, অনেকবারই আমরা অনেক সময় নেমেছি, আমাদের সিনিয়ররাও নেমেছে, একটাই দাবি, ন্যায় বিচার। এই বিচারটা যেন সঠিক হয় সেই জন্যই আমরা এসেছি। আমরা বিশ্বাস করে এসেছি যে বিচারটা হবে সঠিক, আগেও হয়েছে, এবারও হবে। এটা আমাদের প্রাথমিক দাবি, এবং বিচারটা যেন সঠিক হয়। যে ঝামেলাগুলো উঠেছে, বিচারটা সঠিক হয়নি তো, সেই জন্যই তো কোর্ট এসছে। তো আমরা আশা করছি যে কোর্ট এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এই অন্যায়টার ন্যায় বিচার ঠিকঠাক ভাবে যাতে করে। আমি মহিলা হিসেবে এই মুহূর্তে এই কথাগুলো উঠে আসছে, তার কারণ এই জঘন্য ঘটনা যেটা একটা মেয়ের সাথে হয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার ভালোবাসার শহর, প্রিয় শহর কলকাতায়, সত্যি কথা মর্মান্তিক, দুঃখজনক, বলে বোঝাতে পারবো না কতটা লজ্জিত। কিন্তু আমি মানুষ হিসেবে বলবো, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষের এটা বেসিক রাইট, সিকিউরিটি, ভালো থাকা, নিজের জায়গায় ভালো থাকা, নিজের কর্মস্থলে ভালো থাকা। সেইটা আলাদা করে ওরকম ভাবে হতে পারে না যে আটকে দিলাম যে আমরা নাইট শিফট করতে পারবো না। তাহলে আমরা কি মহিলারা যারা শুটিং করছি নাইট শুট করতে পারবো না? শুধু অভিনেতা অভিনেত্রী বলে নয়, আজকে আমরা অফকোর্স আমাদের আর্টিস্ট ফোরাম থেকে আমরা সবাই বেরিয়েছি, কিন্তু আমরা যারা নিজেদের মতো করে কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই রাস্তায় নেমেই বিচারের দাবি করছি, এবং সমস্ত মানুষ, শুধু আমরা বলে নয়, পুরো কলকাতা এবং ইনফ্যাক্ট পুরো দুনিয়া, বিশ্বে এই ঘটনা এখন বিশ্বকে নাড়িয়ে তুলেছেন, এবং সবাই কিন্তু রাস্তায় নেমে এই অপরাধের এই বিচারের জন্য দাবি করছেন, এবং আমরাও সেই সেম দাবিটাই করছি।